This is chapter 12, variation and classification from science fact file 2, and we are doing test yourself from first three pages. The first question here is, to which species do human beings belong? So human beings जो हैं वो जिस species से belong करते हैं वो homo sapiens है. Where do people get their characteristic from? Obviously people get their characteristics from their parents. आपके पेरेंट्स की जीन्स जो आप में ट्रांसफर हो रही होती हैं, दे डिटरमाइन योर characteristics. So people get their characteristics from their parents through their genes, such as eye color, blood type, and diseases are also passed genetically, like diabetic होना. It's not just due to the food you eat, you may be genetically have your disease. Next question here is, why do scientists call these differences what they call these differences termed as variation. Variation means change hona, vary hona, ek दूसरे से different hona. Okay, the next question here is, there is variation in your class. What does this mean? There is variation in your class, in your home, everywhere. You can define it in the way that you all are different from each other, because um, all of you are same in the one way that you have two eyes, nose, lips, head, everything. But the color, your hair texture, your height, your weight, everything is different. So variation means differences between members of the same species. Variation in a class refers to differences among students in terms of their eye color, height, weight, skin color. The variation between students may be continuous, discontinuous, or acquired, because these are three different type of variations. Describe a normal distribution curve. Explain what it means. Distribution curve हम draw करते हैं, मतलब for example if we have 30 to 50% और हमने उनकी height जो है वो measure की है. So अगर हम उन सब की height को as a graph show करना चाह रहे हैं तो हम उसकी एक mean value ले लेंगे और उस mean value को सेंट्रल वैल्यू कंसिडर करके उसके इर्द गिर्द बाकी सारी वैल्यूज ड्रॉ करेंगे. तो यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत लंबे लोग भी बहुत कम होते हैं और जिनकी हाइट बहुत शॉर्ट होती है वो भी बहुत कम होती है, यूजुअली एवरेज हाइट के होते हैं. तो आपका जो कर्व है वो बहुत बेल शेप ड्रॉ होता है. So that is your normal distribution curve. Normal distribution is symmetric distribution about that mean. It shows that data near the mean are more frequent than data far from the mean. The normal distribution curve of the heights of human being looks like a shape of bell. Height of 50% will be measured. For making graph, average value will be taken. Most people will be closer to that value, and meanwhile taller and shorter people exist but with decreasing number. तो बहुत कम नंबर होता है तो हमारा जो सेंट्रल ग्राफ बनेगा वो बड़ा सीक्वेंस्ड ग्राफ बनता है. Say which of following are examples of tongue rolling is a discontinuous variation. आप टंग रोल कर सकते हैं या आप टंग रोल नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें कोई और सेंट्रल पोजीशन नहीं है. Discontinuous variation is that type of variation which doesn't have that continuous value नहीं होती उसमें. So discrete group बनते हैं. Acquired नहीं हो सकती है. It's genetically possible कि आप टंग रोल कर सकते हो नहीं कर सकते. Height कंटिन्यूस वेरिएशन है. फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट 5 फीट है और आपके फ्रेंड की हाइट 5 फीट 1 इंच है और उसके आपका दूसरा जो फ्रेंड है वो 4 फीट 9 इंचेस है. सो इट्स अ कंटिन्यूस वेरिएशन. और ये रिक्वायर्ड भी है बिकॉज अगर आप बहुत अच्छी हेल्थ रूटीन फॉलो करते हैं, अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं प्रॉपरली, सो यू मे एड अप few inches, milli-inches. Eye color is also a continuous variation. Your color might be black or light brown, dark brown, and so on. And that is also an acquired because अब you have a lot of surgeries to do and you can change that. Ear loops is a discontinuous variation. या तो आपके ear loops connected होते हैं या disconnected होते हैं, and that is not an acquired variation. Freckles आपकी चेहरे पर जब आना शुरू हो जाते हैं, that is a continuous variation. किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, that may be acquired because of your, if you're not take care of your skin, then obviously you'll get freckles earlier. What is a fingerprint? The pattern of ridges on the skin. आपकी skin के ऊपर आपने देखा होगा कि lines हैं कुदरती तौर पर. These ridges, these are lines are considered as fingerprints जो imprinted हैं आपकी skin में. Um, why do we have ridges on our fingertips? Fingertips पे जो ridges हैं उससे आपकी जो skin है वो थोड़ी uneven होती है जिससे friction produce होती है, and they help you a lot. They give us better grip by providing our skin more friction. They may also help keep the skin more tearing easily, that keep away from the tearing easily. Fingerprints may provide protection for fingers, and fingerprint increase our sensitivity to touch. Describe four types of fingerprints. We have loop, walls,
आर्चेस एंड मिक्स्ड। सो लूप्स में ये होता है कि आपका एक कर्व बनता है सेंटर में एंड इट गोज टू द सेम साइड, कर्व जनरेट होता है एंड द लाइन गोज टू द सेम साइड। सो लूप यूजुअली मिडिल में बन रहे होते हैं, इसी तरह से एक लाइन आती है सेंटर से, एक चक्कर लगाती है एंड मूव टू द सेम साइड। जो आपके होल्स बनते हैं उसमें ये होता है कि जो स्पाइरल पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं, गोल 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 एंड सो ऑन, आपकी वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। डबल लूप भी हो सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स भी हो सकते हैं, इरेगुलर शेप सर्कल्स भी हो सकते हैं। आर्चेस में होता है कि वीव लाइक पैटर्न होता है, जैसे आप माउंटेन्स बनाते हैं, जैसे बच्चे माउंटेन्स ड्रॉ करते हैं, इस टाइप का पैटर्न होता है। और जो मिक्स्ड है उसमें आपकी ये तीनों कॉम्बिनेशन आते हैं। यू कैन इजीली सी लूप में एक ही तरफ से लाइन आ रही है, सेंटर से वो कर रही है, उसको घूम रही है एंड देन मूव टू द सेम साइड, और इसी तरह से वन बाय वन ये लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। होल्स में आप देख रहे हैं कि आपका सेंटर एक सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, वो बड़े बड़े सर्कल्स बन रहे हैं। और आर्चेस में यू कैन सी दैट माउंटेन्स, you can, if you want to draw it, you are not supposed to draw it so intensively as on your finger. You just need to draw it like this ताकि देखने वाले को समझ में आ सके that what you want to draw. Next question is describe one way of looking at your own fingerprint. अगर आप अपने खुद के fingerprint देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत easily। आप even you can, if you want to just judge your that what type of fingerprint you have, so you can use ink and just उसको आप अपने thumb पर लगाएं, finger पर लगाएं and imprint करें on a page पर, you can easily find out. But if you want to pick up that fingerprints from any section, then take a very fine powder that stick to the oil in the fingerprint, जो आपकी इस oily surface के ऊपर adhere करे थोड़ी देर के लिए। Once the fingerprint becomes visible, lift it from the surface, which you can use tape or anything, and transfer it onto the other surface, and later on you can send them to the laboratory for analysis. इसको आप डस्टिंग मेथड कहते हैं कि आप अपने जो सरफेस पर कुदरती तौर पर नेचुरली जो ऑयल मौजूद है, आप बारीक फाइन पाउडर लें, उसके ऊपर गिराएं, डस्ट उससे चिपक जाएगी, जैसे डस्ट आपके हाथों से वैसे चिपक जाती है, एंड देन यू कैन लिफ्ट from the finger and sent to the laboratory. Explain why the police fingerprint every finger of a suspect and not just one. The reason is कि आपकी जो सारी इन सारी fingers पर you can see your own hand. Five की five fingers जो हैं, all have their different patterns. They are not supposed to have same patterns all the time. सो जब आपके पास एक कंप्लीट हैंड का और दोनों हैंड्स का फिंगरप्रिंट होता है, सो यू विल कैच द क्रिमिनल मोर इजीली as compared to one. So the police fingerprint every finger of a suspect and not just one, because every fingerprint is unique. No two fingers have yet been observed to possess same ridges. A fingerprint is an individual characteristic. A set of fingerprints of hand never match to any other human. So it's very easy to determine them that who is the criminal. So next question here is why it is useful for the police to have access to a large database of fingerprints. Look, fingerprints के database पर अगर पुलिस जो है वो उनको एक्सेस है, तो उनको जो मैच करना है अपने जो फिंगरप्रिंट्स वो ले रही हैं, जो फिंगरप्रिंट्स आपको किसी क्राइम सीन से मिलते हैं उन्हें फिंगर मार्क्स कहा जाता है। So make finger marks को आप fingerprints से जब मैच करेंगे, you can easily find out the person, that who exactly the person, who is exactly the suspect who were present there. So find out करना बहुत easy हो जाता है. So when a fingerprint is found at a crime scene, it is called as a finger mark. It is useful for the police to have access to a large database of fingerprints, because cross-checking the finger marks against other prints in police database will make it easier to caught the suspect and the scene at the scene of a crime. Though this method links between different crimes can easily be analyzed. Different जगहों पर जो crime होते हैं, अगर आपको एक ही तरह के fingerprints मिले, you can easily analyze that which person are involved here or like this. So this is all about from this section.